सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये आज जो पढ़ने जा रहे हैं ये कॉपीराइट का सेकंड पार्ट है। इसका पहले वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इससे पहले वाला वीडियो में। ये जो पार्ट है सेकंड पार्ट है। इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसको कवर करना है। सो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन्स क्या है? ये कॉपीराइट के इंक्लूडेड टर्म है। It means these terms are coming under the umbrella of copyright, creative domains. So if you want to understand what is copyright and a concept, you can refer my previous video. So Creative Commons is a non-profit organization which helps in the use of creativity or knowledge-based work with free legal tools. So you have to understand this very specifically, the terminology associated with this. Okay, so that it will be helpful for you. Creative Commons is a non-profit organization, so it is a non-profit organization. It is a non-profit organization which helps in the use of creativity, which helps in the use of creativity or knowledge-based work So this is an organization which deals with the creativity work. Means that may be a book, that may be a journal, that may be a music, that may be a art. So this is the institution, Creative Commons. This is the institution or organization which deals with creativity work, creative or knowledge based work. जो वर्क नॉलेज को बेस करके डेवलप किया गया है विथ फ्री लीगल टूल्स, विथ फ्री लीगल टूल्स टूल्स सो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कॉपीराइट के ऊपर। मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। कॉपीराइट के ऊपर कॉपीराइट ने क्या कहा? सो एनी वर्क मीन्स लिटरेरी वर्क हो गया, म्यूजिकल वर्क हो गया और आर्टिस्टिक वर्क हो गया। एनी वर्क कैन बी यूज्ड बाय प्रॉपर परमिशन, कैन बी यूज्ड बाय प्रॉपर परमिशन. So any work which can be used by proper permission, so this is called come under copyright. This work will be used by you taking proper permission, otherwise copyright will be violated. So copyright एक ऐसा राइट है, copyright is the right given to the owner of these type of works. Copyright is a right given to the owner of these type of work. So what is Creative Commons is saying? Creative Commons is saying that so it is organization which helpful to use these work and it is free by applying some legal tools. कॉपीराइट इसको इंक्लूड कर रहा है, कह रहा है कि ये मेरा अधिकार में अधीन में है। और क्रिएटिव कॉमन्स कह रहा है इसको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग सम लीगल टूल्स। कुछ लीगल टूल्स को अप्लाई करके हम इसको यूज कर सकते हैं फ्रीली। बाकी कॉपीराइट कह रहा है ये आपको फ्रीली नहीं कर सकते हैं, आप मुझे परमिशन लेना चाहिए। तो ये तो एक मतलब रिलेटेड क्वेश्चन है, रिलेटेड टॉपिक्स है। कॉपीराइट इज अ राइट गिवन टू द ओनर ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट और ओरिजिनल creative work or original literary work. And Creative Commons, it is an organization which helps to use the creative work or knowledge based work in free of cost by using free legal tools. ओके, सो क्रिएटिव कॉमन्स कुछ और नहीं है, ये कॉपीराइटेड वर्क या फिर नॉलेज वर्क या फिर कुछ लिटरेरी वर्क को फ्रीली यूज करने में मदद करता है बाय अप्लाइंग सम लीगल टूल्स। कुछ लीगल टूल्स को लेके कुछ लीगली वो उसको आपको ये अलाउ करेगा यूज करने में। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द क्रिएटर ऑफ ए वर्क सो दैट द क्रिएटर ऑथराइज स्पेसिफिक यूज ऑफ हिज और हर वर्क। सो क्रिएटिव कॉमन्स क्या करता है? क्रिएटिव कॉमन्स है, क्रिएटिव कॉमन्स allow the owner
provide the creator means owner of the work, so that the creator authorize specific use of his or her work. So सीसी जो है क्रिएटिव कॉमन्स अलाउ करता है ओनर को, सो दैट ओनर क्या करे, परमिशन दे स्पेसिफिक यूज के लिए, परमिशन दे स्पेसिफिक यूज के लिए। और स्पेसिफिक यूज क्या होता है? रिसर्च रिलेटेड यूज हो गया, स्टडी रिलेटेड यूज हो गया। तो दिस वे द कॉपीराइटेड वर्क कैन बी यूज्ड, because copyrighted work, if you are using the copyrighted work, that means you are need to taking permission from the owner. But creative commons, what is saying, it is allowing the owner to give some permission for specific use. ये ओनर को एक ऑप्शन देता है कि आप कुछ परमिशन दीजिए स्पेसिफिक यूज के लिए जिसमें सोसाइटी का अच्छा हो। तब जाके कॉपीराइट वाले क्या करते हैं, दे अलाउ, यस यू कैन यूज दिस माई यूज माई बुक इन योर वर्क फॉर रिसर्च पर्पज, फॉर स्टडी पर्पज और फॉर गवर्नमेंट डिसीजन पर्पज। ठीक है, ये सीसी का ये मेन पॉइंट है, मेन डिसीजन है, मेन ओपिनियन है और मेन इनिशिएटिव है, कह सकते हैं। सीसी इज ए वेरी गुड इनिशिएटिव, बिकॉज विदाउट सीसी वी कैन नॉट यूज कॉपीराइटेड मटेरियल्स, even if for research purpose also, because research is very much important, you know. So if you want to conduct a research, so you need to know something deeper and deeper. So for that purpose, if you are getting some copyrighted material, so you cannot use them, so you will go through CC, Creative Commons. By applying Creative Commons, the owner of the work or creator of the work will give you some permission for specific use, so that you can use the copyrighted work. Here the creator create a license and gives other. Here the creator creates a license and gives other for use share of their original work. So creator क्या करता है? Creator gives a license and gives to the user other for use. Here owner क्या करता है? Owner एक license दे देता है, yeah, I am giving you a license so that you can use my product, use my work. So by using this license, one can use the original work, because the creator of the original work has already provided the permission. CC 0 ये एक important point है, इसको याद रखना। CC 0 is a protocol which enable the author to place their work in public domain. CC 0 is a protocol which enable the author to place their work in public domain. CC 0 sometimes if a author of a work want to sell or made available this work into the public, then he use CC 0. It is a protocol, it is a rule. By applying this rule, the author of the work can publish his work or her work in public domain. public domain क्या है, इसको हमने पहले वीडियो में ब्रीफली एकदम एलाबोरेटली पढ़े थे, अभी भी थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ। पब्लिक डोमेन आर दोज प्लेसेस वेयर everything will be free. So if a author want to make his or her work free, then he have to use CC 0 protocol. It is a rule. By using this rule, the copyrighted work will be in public domain or free. Then some इंटरनेशनल ट्रीटीज को पढ़ेंगे। ट्रीटीज मतलब एग्रीमेंट होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है और सिर्फ इसको याद ही रखना है, क्योंकि ये सब मतलब थोड़ा याद रखने वाला ही चीज़ है, इसमें कुछ समझना नहीं है फिलहाल। इंटरनेशनल ट्रीटीज मीन्स some agreements are there, it is which is held in a global mode, so that it is called as international treaties, international agreement. So what type of agreement happened on copyright? These are called international treaties. So first one is Bonn Convention. You already heard the term Bonn Convention. It is developed in 1886. It covers only printed materials. ये only कवर करता है क्या? प्रिंटेड मटेरियल्स। दोज प्रिंटेड मटेरियल्स को ये कॉपीराइट के ऊपर कवर करता है। इट डील्स विथ ओनली प्रिंटेड मटेरियल्स।
बट देन आफ्टर यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन यूसीसी, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, और भी एक टर्म है इसके रिलेटेड, आप कंफ्यूज नहीं होंगे आई होप। यूबीसी, हमने जो अभी पढ़ा वो यूसीसी यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, ये कॉपीराइट कन्वेंशन है। और ये क्या है, बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन है, क्लासिक कंट्रोल है, बिब्लियोग्राफी कंट्रोल, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल। ठीक है, ये तो टर्म डिफरेंट है, थोड़ा संभल के, मतलब कंफ्यूज मत होना इसके ऊपर। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन यूसीसी डेवलप्ड इन यूनेस्को बाय यूनेस्को एट जेनेवा इन 1952। ये यूनेस्को ने डेवलप किया है, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ सोशल साइंस ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को एट जेनेवा in 1952. Then after Rome Convention 1961, it include media technology, means media means printed non-printed media. This include only printed media. Bonn Convention, but Rome Convention, it is a modification of the Bonn Convention, you can say, because Bonn Convention only include printed materials like books, newspaper, these are the thing. But Rome Convention include non-printed media टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ हो गया, सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया, जो भी है वो सबको इंक्लूड किया है रोम कन्वेंशन। ठीक है, अभी देखते हैं कॉपीराइट प्रोटेक्शन इन इंडिया। कॉपीराइट प्रोटेक्शन इन इंडिया, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 केम इनटू इफेक्ट इन 1958। इंडिया का जो कॉपीराइट एक्ट है वो 1957 को आया, लिखा गया, और इफेक्ट में आया क्या, कब आया, 1958 में। इन केस original literary, dramatic, musical and artistic work, the copyright protect 60 years after the death of the author। अगर कॉपीराइट किसके ऊपर है, अगर आपका वर्क, अगर एक ऑथर का वर्क आर्टिस्टिक वर्क है, लिटरेरी वर्क है, ड्रामेटिक वर्क है, म्यूजिकल वर्क है, सो द कॉपीराइट विल बी गिवन 60 ईयर फ्रॉम द डेथ ऑफ, आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। ठीक है, लाइफ टाइम तो रहेगा, मतलब जब तक ऑथर का डेथ नहीं हुआ है तब तक तो कॉपीराइट रहेगा, बट डेथ होने के बाद भी 60 ईयर्स तक उसका कॉपीराइट रहेगा उसके प्रोडक्ट के ऊपर, उसके वर्क के ऊपर। इन केस ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग्स, फिल्म, एनोनिमस सीडोनिमस पब्लिकेशन, वर्क ऑफ गवर्नमेंट, द 60-year पीरियड काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन। इन केस the work is not like this, literary work, dramatic work, so the work is like recordings, films, movies, sound, or any anonymous pseudonymous work। anonymous pseudonymous work, ये आपके लिए टैक्स दिया गया है, व्हाट इज एनोनिमस सीडोनिमस वर्क। इसको आप थोड़ा नेट पे देखिए, क्योंकि ये अगर मैं इसको समझाऊंगा तो हमारा वीडियो और भी लेंदी होता जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले आपको एक टैक्स है, इसको थोड़ा देखिए आप, मतलब ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और इन दोनों में कंपैरिजन क्या है, एकदम फुल्ली समझना है उनको, व्हाट इज द फुल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस टू टर्म्स। अगर नहीं हुआ तो मैं हेल्प करूंगा, आई गारंटी। एनोनिमस एंड सीडोनिमस पब्लिकेशंस, वर्क गवर्नमेंट, वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट, ये जो साउंड रिकॉर्डिंग्स हो गया, एनोनिमस पब्लिकेशंस हो गया, फिल्म्स हो गया, मूवीज हो गया, इनका कॉपीराइट कब तक रहता है, 60 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। जब रिलीज हुआ, जब प्रोडक्ट रिलीज हुआ, जब पब्लिकेशन पब्लिश हुआ, उसी डेट से 60 ईयर्स। लेकिन बुक्स, रिसर्च पेपर, जर्नल वगैरह उसका क्या है, ऑथर का लाइफ टाइम एलोंग विथ 60 ईयर आफ्टर द डेथ, ऑथर का लाइफ टाइम एलोंग विथ 60 ईयर्स आफ्टर द डेथ। I hope you understood this. Otherwise, if you are not getting any if you are getting confusion related to these terms, you can give me some comments. I will try to understand in next video or sometimes else. But you have to understand this. Otherwise, you will be very it will be very difficult to answer the questions when you are getting like the duration of copyright, the time period of copyright. In this type of question, it will be very difficult. So that you have to understand these two things. If you are not getting, then you can comment me in my comment section. Okay. So then after fair use, fair use भी बहुत important point है। fair use और copyright of copyrighted work, ये क्या है,
fair use means the use of copyrighted the use of copyrighted work but with some condition. Fair use means use of copyrighted works but some condition. So copyrighted work, as I told before, there is one agency organization, that is CC. So CC also you can use, but there are some legal tools for CC. And on the other hand, you can use by fair use. फेयर का मतलब क्या पता है? फेयर होना चाहिए, मतलब कुछ नेगेटिविटी होना नहीं चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. फेयर यूज. Fair use means the use of copyrighted work, but some condition. There are some conditions are there. ये सब कंडीशन कहाँ पे है? दिस कंडीशन आर रिटन इन द आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉपीराइट एक्ट. इंडियन कॉपीराइट एक्ट में आर्टिकल 52 में दीज आर द कंडीशन आर रिटन देयर. तो क्या है वो कंडीशन? दीज आर सिंगल कॉपी और फॉर प्राइवेट नॉन कमर्शियल रिसर्च पर्पज. Single copy. You can, if a book is written, you can keep a single copy for personal, non commercial, commercial पर्पज से नहीं, नॉन कमर्शियल और फॉर रिसर्च पर्पज में आप एक ही कॉपी यूज कर सकते हैं. क्रिटिसिज्म और रिव्यू ऑफ वर्क. क्रिटिसिज्म और रिव्यू ऑफ वर्क मीन्स अगर किसी ने कुछ पब्लिश किया है, अगर समवन रिटन ए बुक और पब्लिश्ड इट and you think there is some negative impact, there is not well written book, this is not a well written book. अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ा अच्छा बुक नहीं है और उसमें कुछ गलतियां हैं, उसमें कुछ सुधार होना चाहिए, तो आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं. उसको कहते हैं क्रिटिसिज्म कहते हैं. जैसे कि मैंने अभी फॉर एग्जांपल एक देता हूँ आपको. रंगनाथन ने 5 लॉ डेवलप किया. लेकिन उनका जो सपोर्टर है उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है, इट्स ओके, सपोर्टर को सपोर्ट मिल गया. लेकिन जो अपोजिशन है उन्होंने उनको अपोज किया. उनके 5 लॉ में क्या अपोज किया? वो जो लॉ डेवलप किए उनको कोई बोला गया कि आपका लॉ में ये वाला चीज़ इंक्लूड नहीं है, आपके लॉ में इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स इंक्लूड नहीं है, आपके लॉ में टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कुछ नहीं है. दीज आर कॉल्ड एज क्रिटिसिज्म. When you critics the work with related to its negative impact, with related to its drawback, with related to its limitations, these are called criticism. We are giving a review. अपना पॉइंट दे रहे हो आप उनके वर्क के ऊपर. So criticism of a work will be comes under fair use. So it will not comes under copyrighted work. If you are criticizing a copyrighted work, it is come under fair use. You have opinion to criticize. You have the permission to criticize that original work. Take backup of damaged or lost work. Suppose there is a software and you already know software will change when technology will change. If technology will going to be developed, then the previous software need to be developed, otherwise it will not support it. So in that case you have to take backup or some modification so that in future the software can be used. So it is out of copyright. इसमें कॉपीराइट नहीं आएगा क्योंकि आप इसको प्रिजर्व करने में मदद कर रहे हैं. आप इसको प्रिजर्व कर रहे हैं, आप इसको संभाल के रख रहे हैं फॉर फ्यूचर यूज के लिए. फॉर जुडिशियल प्रोसीडिंग एटसेट्रा. इफ सम जुडिशियल केसेस आर हैपनिंग, जुडिशियल मतलब समझ रहे हैं ना, कोर्ट कचहरी का काम. Judicial cases are happening. In that case, the government can use the copyrighted materials. Judicial cases चल रहा है या फिर किसी के लिए कुछ सुनाई हो रहा है. In that case, government can use the copyrighted materials. So these are the comes under the fair use. इसमें जो copyrighted materials का वो fair use हो रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. कॉपीराइटेड मटेरियल का फेयर यूज हो रहा है, मतलब इसका कुछ कॉमर्शियल यूज नहीं हो रहा है, कुछ नेगेटिव यूज नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ऑथर के ऊपर कुछ बैड हैम्पर हो या फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़े. ठीक है, तो फेयर यूज हो गया.
कॉपीराइट प्रोटेक्शन इन इंडिया हो गया, कॉपीराइट प्रोटेक्शन आउटसाइड इंडिया मीन्स वर्ल्ड वाइड हो गया, और क्रिएटिव कॉमन्स हो गया। तो इस वीडियो के बाद हम कुछ और ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉपीराइट का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो आएगा वो पैटर्न के ऊपर आएगा, क्योंकि हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो ये सब आता है आईपीआर के अंदर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर। इसके अंदर सब आता है। फॉर एग्जांपल कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, और भी बहुत सारा है जो भी है, ये सब आईपीआर के अंडर ही आता है। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अलग है और कॉपीराइट अलग है। हाँ अलग है, बट कॉपीराइट इंक्लूड इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लाइक दिस। Copyright include in the intellectual property rights, and also patent also included in IPR. So these all three concepts are included under IPR. So हमारा copyright खत्म हो गया, अभी हम जाएंगे patent के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू आर एंजॉइंग माई वीडियोज़। सो अगर कुछ आपको हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसमें वजह से ये मेरे भी हेल्पफुल आएगा और बाकी स्टूडेंट को भी, बाकी स्टूडेंट के पास भी पहुंच पाएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। हैव ए नाइस डे।